Hello and good evening. A very warm welcome to our guest today, Major General Harsh Kakkar. As you all know, he's one of us, but uh, we had not been having him on the show for quite a while. So welcome to the show, sir. Thank you, Tushant. So today, as the audience would have come to know from the flyer, that we are going to discuss something about Pakistan, not really Pakistan, but something about Pakistan. And not much was although happening in Pakistan, but in the recent past, there has been a flurry of activities. काफ़ी पाकिस्तान के अंदर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, खास तौर से उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ज़ोब में, जो कि बलूचिस्तान और केपीके के एकदम बॉर्डर पे आता है, वहाँ पे एक बहुत भयंकर हमला हुआ था बीएलए द्वारा, जिसमें कि पाकिस्तान के 12 पाकिस्तानी आर्मी के लोग शहीद हो गए थे या मारे गए थे। और इसी अटैक के तुरंत बाद, यहीं यहीं पे छोड़ा नहीं, तुरंत ये अटैक चल रहा था, तभी उन्होंने दूसरी जगह पर अटैक किया, उसी सुई जैसी जगह नाम है उसका, और वहाँ भी कई कई पाकिस्तानी सैनिकों को हताहत किया। तो क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पहले इमरान खान ने शुरू किया, फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद मुनीर साहब दोबारा वापस कंट्रोल में लेके आए पाकिस्तान को। और मैंने कहा भी था कि अभी तो देखिए, अभी वेट कर रहे हैं वो लोग कि इन सब चीज़ों से निजात पाएँ, तो कुछ वेस्टर्न पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो। सर, क्या हो रहा है सर? क्या हाथ से जा रहा है इनके बलूचिस्तान और केपीके? वेरी सिंपल। पहले तो स्टार्ट करें हिलेरी क्लिंटन के स्टेटमेंट से। यू हुँ, कान कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स. यस, Eventually, एब्सोल्युटली, those snakes are going to turn on whoever has them in the backyard. करेक्ट। ये जो जोब कंटोनमेंट में हुआ, in which 12 soldiers died, and following that have been multiple attacks. I'm going to start with reading out the Dawn newspaper of day before. The Khyber Pakhtunkhwa police have said 665 militant attacks, including 15 suicide bombings, were reported in the province from June 18th, 2022 to हुँ, June हुँ, 18th, 2023. एब्सोल्युटली। They also reported 382 gun attacks, 107 grenade blasts, 145 IED explosion, 15 rocket and missile attacks. अगर आप देखो, this is not a joke. And if you look at it, within the area, I mean, the rate at which these actions are taking place, आप सोचो, what do you call a state which is going through this? It is their own doing. Taliban ko बिल्कुल, support kiya, as long as the TTP had not gone in 2008 when Musharraf ordered the attack on Lal Masjid, basically to try and bring that situation under his control. There were about 100 Pakhtuns who were killed. और वहां से पैदा हुआ TTP, and the TTP is directly linked to the Taliban. Pakistan government tried to play a different game, claiming that the TTP and Taliban are good terrorists and they will get along. Or those are 2014 was the attack on the army school in Peshawar. Even after that, the Pakistan army did not react, just because they had the Taliban with them in Quetta. And the Taliban were attacking the Americans. The Pak army was thrilled. And everybody in Pakistan kept saying that when the Taliban comes in, they're going to join us. We will move towards Kashmir together. And here it is the Taliban which is now backing the TTP. And it is backing it to the level, and the TTP is also playing a very safe game. उन्होंने एक नया टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट कर दिया, TJP, Tehreek Jihad Pakistan, so that यस, the Taliban doesn't get involved. And beautiful response given by the Taliban. Now, Pakistan has been crying to them after the Zob cantonment attack. The the Pak defense minister has told them that you're not adhering to the Doha agreement.
और तालिबान ने Yes. रिस्पॉन्ड किया, with whom did we sign the Doha agreement? तुम With the कौन हो? US, not with तुम Pakistan. The statement was Zabuddin was saying तुम कौन हो? And तुम simple, and कौन the हो? answer is very simple, that we signed it with the US. You are not a US ally. How are you Correct. involved? And then Absolutely. the defense minister of Afghanistan says, "What Durand line? It is a line. It is not a border. Finished." So, Correct. they were all this time banking that we will be able to control the Taliban. If you remember that lovely photograph that came out about the Pak ISI chief, kya naam tha uska? The last ISI chief who's now quit the army and a Faiz strong Hamid. supporter of Faiz, Imran, Faiz Hamid, Faiz Hamid. standing at the Kabul, standing in a hotel in Kabul with a teacup in his hand. Everything is now going to be okay. It is anything but okay. And that is where the situation is. Correct. And now So they don't know what to do. absolutely. I will just take this argument a little further. केपीके में जो हो रहा था तालिबान टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में वो तो ठीक था, लेकिन इस समय जो फिगर्स मेरे पास हैं जो कि बलूचिस्तान के बारे में हैं, आप सरप्राइज्ड होंगे कि बीएलए जो है इस समय उसकी जो फिगर्स हैं इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ किल्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। अ, ऐसा नहीं लग रहा है कि बलूचिस्तान अब पूरी तरह से इनके हाथ से जा चुका है, गिवन द फैक्ट दैट कि इस समय खुलेआम बिना किसी रोक-टोक के जब भी वो चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक हो जाए। थोड़ा बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के ऊपर भी आई वुड लाइक यू टू थ्रो अ लिटिल लाइट अदर देन द केपीके। केपीके ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस ज़्यादा जानते भी रहे हैं, बट बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे आप क्या वो समझते हैं? See, क्या as far as Balochistan is concerned, firstly we must also realize that TTP attacks now are shifting from या Khyber Pakhtunkhwa to also Balochistan. And this is causing a major worry क्योंकि वो बलूचिस्तान में and the BRA or the Baluch Rebel Association, उसके तो, I mean, forgetting about the local terminology, it's a group of rebel groups and which are together challenging the Pak army. They control the locations, they control the roads. और जहां पे हरकत मिली, that's where they're going to go out. Now, the threats which Munir is giving actually makes no sense. Because Pakistan can do nothing. You launch air power, if there are damages in Afghanistan, the attacks are going to increase in Pakistan. Pakistan के पास ना पैसा है, ना military power है to cross the Durand line and attack Afghanistan. Now you're talking of Munir. We must realize that very recently Munir went to Iran. Why did he go to Iran? To request the Iranian government, you apply pressure on the Taliban to stop supporting the TTP. Now, as far as Tehran is concerned, Tehran's relations with Kabul काफी ठीक है. Tehran is more concerned about Pakistan's support in Balochistan to anti-Iran groups. ओके The various groups which are anti-Iran and attacking Iranian soldiers are based in Balochistan, whom Pakistan is providing support. He must have gone and said, Munir, that I will stop all this and we will not interfere. But as far as Tehran is concerned, it doesn't want to spoil relations with Kabul. It can handle Pakistan. जहां पे ईरान ने पाकिस्तान को ऑयल देना बंद कर दिया, the entire Pakistan government of the nation will come almost on a standstill. The amount of oil which is smuggled from Iran into Pakistan is keeping the country running. जिस दिन वो रुक गया, everything will come on a standstill. It cannot survive on imported oil coming by ship. Now, as far as Kabul is concerned, recently there was a joint appeal by Iran and Kabul, by Iran and Afghanistan, once they inaugurated the new railway line, for investments to come in. चाहे कोई आएगा नहीं, but they were able to appeal for investment. Why will Tehran get involved with Islamabad or Rawalpindi?
It's their juice. Let them fight their battle, and the battle is not going to be easy. Now, with the way it is spread to Balochistan, with the way the BRA is rising, and recently the BRA chief ने एक statement भी दिया है that there is no way we are going to let that go. So here the battle is now between the rebel groups and the Pakistan army, and it is looking for control. Dushan, there is one very major factor जो हम भूल रहे हैं. The Taliban has got a collection of suicide battalions. Yes. Each member of the suicide battalion is trained and motivated for suicide attacks. Some of them are deployed along the Pak-Afghan border. अगर पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा ही तकलीफ डाली, and these guys enter Pakistan, whether it be Khyber Pakhtunkhwa, whether it be Sindh, whether it be Punjab, Pakistan will be in a state which is worse than Afghanistan. Yes. And this is one of the biggest fears which Pakistan has in attempting to do anything in Afghanistan. You can just then they cross over, Pakistan is in trouble. ओके जनरल काकड़ सर, एक बात जो है वो दुनिया को शायद हमारे तरफ जो कॉमन पब्लिक है उसको शायद नहीं पता है, वो ये है कि इस समय पिछले 2 साल से टीटीपी और बीएलए के बीच में एक अलायंस हो गई। एक इसको एक टैक्टिकल अलायंस बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनका एक आइडियोलॉजिकल मेल हो गया है, लेकिन एक कॉमन एनिमी के खिलाफ, क्योंकि वो इस समय मानते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक कॉमन एनिमी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों ने आपस में मिलके अलायंस की है। जो अटैक वहां पर हुए हैं उसमें 2 चीजें अलग देखी गई हैं। पहली बात तो जो हथियार है वहां के, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज हुए हैं। ये वही हथियार हैं जो अमेरिका पीछे छोड़ के चला गया था। दूसरी बात, इन हथियारों को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई उठा लो हथियार और चलाना शुरू कर दो। आपको पता है हम लोग आर्मी में हैं, एक हथियार को यूज करने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इन हथियारों की जो ट्रेनिंग है वो कहीं न कहीं इनके टीटीपी के द्वारा की जा रही है। अलायंस की बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन जो 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 अगली बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान तालिबान, जिसके ऊपर पाकिस्तान के इतने एहसान थे। आई मीन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट द यूएस ऑक्यूपेशन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उनके काफ़ी कुछ एहसान थे। वो उसको किस बेसिस पे मुँह दिखा रहा है? ये एक बहुत ही समझने वाली बात होगी कि आँख कैसे दिखा रहा है वो? मतलब एक छोटा-सा देश जो कि बहुत मुश्किल से अ, आज़ादी पाता है किसी के सपोर्ट के द्वारा, उसी के खिलाफ हो गया है। तू कौन? ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये नॉर्मली नहीं आती है अनलेस कोई पीछे इनके बैकिंग हो रखी है। तो ये जो चीज़ है, कौन है इनके पीछे? अब मैं आपको ये बताता हूँ। एक आपको ये वीडियो देता हूँ। ये जो वीडियो है आलिया आलिया का वीडियो है, ये पाकिस्तान की जो यूट्यूब यूट्यूबर है, ये वीडियो इसमें इतना वायरल हो रहा है और इसमें दबा के ये बताया जा रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान तुम्हारे ऊपर आँख दिखा रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम कहाँ के हो? कैसे हो? ज़रूर इसमें किसी न किसी की बैकिंग है। क्या आप बता सकते हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान को कौन बैक कर रहा है, इस तरह की हरकत करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ? देखो, पहली बात तो ये तालिबान जो हम कहते हैं अफगानिस्तान में है, उसके अलग अलग ग्रुप्स हैं जो मिल के सरकार बना रहे हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स इज द हक्कानी नेटवर्क। हुँ, हुँ। हक्कानी, टीटीपी, तालिबान और आईसिस, इन सब का रिक्रूटमेंट उसी स्टॉक से आता है। द हक्कानी एंड द टीटीपी, इनफैक्ट इस साल एक मार्च का वीडियो है which Pakistan should have woken up to, जब हक्कानी का इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान तालिबान, वो टीटीपी का जो लीडर है मसूद, उसके पीछे खड़े होके आई मीन वो मॉस्क के अंदर दे वर सेइंग द प्रेयर्स।
नाउ उसके पीछे क्यों खड़ा था? ही वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू द लीडर ऑफ टीटीपी. This itself is an indicator कि हक्कानी नेटवर्क has a lot of respect for the TTP leadership, खास तौर पे जो उनका महसूद है. अच्छा, now when you so the TTP is getting direct support from the Haqqani network. तालिबान एंड हक्कानी नेटवर्क ने मिलकर सरकार बनाई है. नीदर वांट्स द अदर टू गो, और उनको पता है कि अगर बीच में रिफ्ट आया देन देयर विल बी एन इंटरनल सिविल वॉर विद इन अफगानिस्तान बिटवीन द लीडरशिप ग्रुप्स, और ना ये कंट्री चलेगी ना कुछ होगा. सो दे आर लेटिंग द अदर साइड जिसको जो करना है करने दो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. अब आपने वो मैप दिखाया था पाकिस्तान का, दिखाता हूं मैं दोबारा आपको. आप लगा उसको यूज करिए, आप उसको यूज करिए ताकि लोगों को पता चले कि हम बात किसकी कर रहे हैं. ये लीजिए आप अच्छा, इस मैप. अच्छा, अगर आप देखो, एज फार एज द तालिबान इज कंसर्न, उनको सिर्फ केपीके चाहिए, खैबर पख्तूनवा. As far as they are concerned, they want to make it into a separate country, or what they want to do here is bring in Sharia. Inka demand has been this from the beginning. As far as the Baloch is concerned, they want Balochistan to be independent. अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में अपना झगड़ा चल रहा है. सिंध सिमरिंग है पर कुछ नहीं हो रहा खास, ना सिंध में ना पंजाब में. Now pressure of the TTP remains on KPK and it is collaborating with Balochistan, क्योंकि इनका agreement है, बलूच को ना KPK चाहिए ना TTP को बलूचिस्तान चाहिए. बिल्कुल. And all are Pashtuns. After all, they are on both sides of the border. The number of Pashtuns जो मेरे को कांटेक्ट करते हैं, because Kakkar is a very well known Pashtun clan in Balochistan. बिल्कुल, थोड़ा ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो कक्कड़ का ओरिजिन कहाँ है, वो यहाँ से है और And हमारे देश में काफी basically, I mean, the belt starting from KPK and going down to Balochistan, और मेरे को जो कांटेक्ट करते हैं on Twitter, basically, they say that the power of the Kakkar clan is very massive in this belt. And इनका अपना जिर्जा होता है कक्कर्स का. So the whole area as such is clearly divided between the two parties. Now there was another report which came out जिसने बोला that the Taliban has got 300,000 light arms, 26,000 heavy weapons, and about 61,000 military vehicles left from the US. 300,000 light arms is not a joke. Taliban kitna sambhalega? How much are they going to use? So this that flitters and goes down to the TTP and goes down to the others. I wouldn't be surprised अगर BRA को भी वहीं से आ रहा है. After all, they are on both sides of the border. Yes. And now I'm going to come down to something even more interesting. As long as the US was in Afghanistan, every second month Pakistan would come out with a new dossier. India has got training camps in Afghanistan. The Indian ambassador and consul generals of India in the various cities are there in Afghanistan, and they are the ones who are conducting training. RAW is running these training camps. अब US चले गया, India चले गया. We've got a small functional embassy in Kabul, basically only to handle the aid जो हम भेजते हैं. टेक्निकल टीम है हमारी. That's टेक्निकल it. टीम. Yeah. Which is basically to handle the aid. अब पाकिस्तान ने चंद दिन पहले एक नया डोजियर निकाला. अगर वो डोजियर कभी पब्लिक में रिलीज करेंगे तो सिर्फ इंडिया का नाम मिटा के अफगानिस्तान लिखा होगा. है तो वही, और पहले भी वो था. इन्होंने इंडिया के खिलाफ डोजियर्स तो यूएन सेक्रेटरी जनरल पता नहीं किस किस को नहीं बांटा. अब ये जो तालिबान के खिलाफ जो डोजियर निकाला वो किसको बांटेंगे? यहाँ पर एक आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि जो ये डोजियर वाली बात हो रही है, मुझे इससे डोजियर वाला गेम याद आ गया. जब हम लोग कभी पाकिस्तान को बोलते थे कि भाई आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, तो वो बोलते थे
हमारे को एविडेंस दीजिए, हमारे को डोजियर्स भेजिए, फिर हम देखेंगे कि भाई आपकी बात में कितना दम है। हमें तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ कुछ हुआ है। बिलीव यू मी, अफगानिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन है। हाँ, पर्सन उनका है, स्पोक्सपर्सन ने यही वर्ड्स बोले। जैबुद्दुल्ला मुजाहिद ने यही बोला हाँ, है कि हाँ, भाई हाँ। हम किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी हमारी टेरिटरी कहीं कोई नहीं यूज हो रही है। एग्रीमेंट तो था, जो था, जो आपने बोला वो आपके साथ नहीं था, वो तो यूएस के साथ था। अगर आपको फिर भी लगता है तो डोजियर भेजिए, एविडेंस भेजिए। तो मुझे ये सुन करके ऐसा लगा जैसे कि उन्हीं की जो चाल थी अब उनके ऊपर उल्टी पड़ रही है। कोई शक नहीं है। या सो I think we are going to see more game in this. Oh You want yes. to say anything else, or I'll ask the next question, sir? हाँ, हाँ, go ahead. But in fact, as you say, it is going to be interesting in the days to come. क्योंकि Yeah, अभी तो कुरैशी cannot stand up. Now can Bilawal Bhutto stand up and start screaming, India is सवाल ही involved. So सवाल ही now नहीं whom उठता। are they going to blame? या तो And यही now मैं when कहा। India says you are supporting terrorist groups, they don't have an answer either. करेक्ट, यहीं पे मेरा जो सवाल था अगला, जो बैकिंग की बात कर रहा था अफगानिस्तान की। कुछ दिनों से ये देखा गया है, पिछले करीब एक साल से, कि चाइना, जो कि अफगानिस्तान के अंदर ऑन द बैक ऑफ पाकिस्तान अग्रीमेंट्स करता था, उसके अंदर एक्टिविटीज करने के लिए प्रपोजल्स भेजता था, अब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के जो तालिबान के साथ डील कर रहा है। चाहे वो आमो दरिया का एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे बाहर से लेकर के अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तक, हर प्रपोजल को वो चाइना जो है डायरेक्टली अफगानिस्तान में जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि चाइना कोई एक लंबी चाल चल रहा हो जिससे कि वो अब पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ कम करके अफगानिस्तान के ऊपर हाथ डाल रहा है। कारण क्या है कि ईरान की, उसकी सऊदी अरेबिया ईरान की एक डील हुई है जिसमें कि उसका एनर्जी इंटरेस्ट छुपा हुआ है। अब इसको सिक्योर करने के लिए वो चाहेगा कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है इस इलाके में और कम हो। ईरान वैसे ही अमेरिका के खिलाफ है। पाकिस्तान से अमेरिका की काफ़ी बनती है अभी भी। I mean, despite all this, Pakistan and US have a considerable amount of things going between them, especially because of the aid which they are dependent on. 9 बिलियन जो मिला है, वो भी 9 तो नहीं, 6 मिला है, 3 की एश्योरेंस है, तो टोटल 9 बिलियन मेल एड मिली है। कहीं चाइना तो अब डबल गेम तो नहीं खेलने लग गया है टू कीप पाकिस्तान ऑन द टाइट रोप? आपके See, व्यू? see, China has got multiple intentions, and iska evidence is clear. The only militant group जिसको Afghanistan has moved away from the borders where it was is the ETIM, East Turkmenistan Islamic Movement, जो बिल्कुल, चाइनीज को जिनजियांग में चैलेंज कर रहा था. बिल्कुल। They are no longer on the Afghan-China border. They have been moved south. Karan, it doesn't want to make things worse with China. Now, as far as China is concerned, China ने माइनिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, बहुत कुछ के लिए किया. It's willing to fund Afghanistan, willing to provide it with everything. पर उसको अफगानिस्तान टाल रहा है. Delaying everything, not giving a decision, letting things go slow. Because Afghanistan also is being very careful not to fall into China's lap. It doesn't Yes. want to come into Chinese influence. अब as far as Iran is concerned, ईरान की तरफ से support है. So basically, Afghanistan is so far staying as an isolated state. India, we don't have a direct border. We are still at a distance. That is why relations with India are good. With China, it is not letting it get too close. It is not letting it get too far. Latest reports say इसने अभी तक उसको माइनिंग के सैंक्शंस नहीं दिए. ओके, ओके। Things are still, though China is desperate to mine. Now, if you realize one more thing, considering the way the TTP is behaving, China has given up extending the CPEC from Pakistan into Afghanistan. China Yeah. doesn't talk about that anymore.
So for Pakistan, जो hope था कि CPSC will go into Afghanistan, it will get income because basically in the long term, India will get involved, other nations will get involved. That is out. If China is going to build any communication into Afghanistan, it is going to go direct. So again, Pakistan is the loser because China is aware the situation with the TTP will not cool down for a collection of years. दो बार टॉक्स हो चुकी हैं, दोनों बार फेल हो गई है between the Pak government and the TTP. The worst part, Pakistan doesn't realize, can you negotiate with a terrorist group? Which terrorist group will, the moment you negotiate with a terrorist group, you are giving them credence. The US gave credence to the Taliban. Today it is there as a state government. If Pakistan negotiates with the TTP, it's going to give credence to the TTP and the TTP is going to come into power. Ultimately in KPK. So there has to be a question of give and take. And it has to, and China realizes that Pakistan can do nothing as far as TTP and Baluch are concerned. There is no point extending the CPEC through. ओके सर, एक आपसे इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन टू यू, एंड दैट इज Imran Khan has been cornered by various methods as far as Pakistan is concerned. Whether it is the army, which initially threatened use of the army courts, etc. Now they have almost cornered him in various cases. Tosha Khana case is in fact in its final stages. But yet इमरान खान इज नॉट लीविंग द कंट्री. नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी पास्ट में भुट्टो के बाद, जब भुट्टो का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से जो भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर था, या चाहे वो अपोजिशन में रहा हो, चाहे वो लीडिंग पार्टी का लीडर रहा हो, अगर वो ही केम अंडर द क्लाउड, वो कंट्री छोड़ देता था. लेकिन इसके ऊपर चौतरफा हमले हुए हैं मई 9 के अटैक के बाद, फिर भी इमरान खान छोड़ नहीं रहा है. कहीं आपको ये लगता है, अब ये मेरी दूर की थ्योरी है, इट मे बी रॉन्ग, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केपीके इमरान खान के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है? क्या ऐसी कुछ आपको संभावना नजर आ रही है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ केपीके का कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ ऐसी बात? बहुत दूर की बोल रहा हूँ मैं, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा सिनारियो बता दिया, बट इसकी संभावना है क्या, क्योंकि आप उस इलाके से देखो, काफी कांटेक्ट में तो रहते हैं. इमरान के ना जाने के दो ही कारण हैं. नंबर वन इज हिज हाई ईगो. उसने सबको अक्यूज किया, यू रैन अवे, चोर है, ये है. सडनली ही स्टॉप्ड इट. हिज ईगो उसको भागने नहीं देगी. द सेकंड is the Chief Justice of Pakistan, who retires on 16 September. Till 16, 17 September, Imran Khan बचा हुआ है. The day the Chief Justice retires और Faiz Isa आ गया, Imran is in trouble. Now, as far as the KPK is concerned, TTP has no love for Imran, for any other. If it has any respect or anything for Imran, it is because Imran was the only leader in Pakistan who wanted negotiations with the TTP, who was willing to settle the TTP fighters in KPK. All those who surrendered, he was willing to settle them in KPK. वो हो गया. The talks broke down is a different story. But the fact is, he was pro settling them down. But of course, nothing will happen in KPK for the near future. Because the Taliban, the TTP doesn't have the power to do, to create that sort of environment for an independent state in KPK. But yes, if Imran Khan leaves the country and tomorrow they do create, one can always say Imran Khan वापस आएगा because he's the most loved soul amongst the locals. And the TTP realizes that he is the only one who wanted negotiations and wanted to settle them. उसी के ऊपर even the current army chief is against Imran for that ground. ओके, चलिए, ये तो आपने बता दिया कि ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है. लेकिन
कुछ जो जो जिसका जिक्र आपने भी शुरू शुरू में किया था, कुछ आंकड़े भी आपने बताए थे, जहाँ तक टेररिस्ट इन्फ्लुएंस का सवाल है इस इलाके में, तो क्या हम ये मान के चलें कि इस समय, आपको याद होगा 2018 से पहले तक, जब केपीके को मर्ज करके एक बड़ी स्टेट बना दी गई, पहले नहीं तो वो फाटा होता था, 7 एजेंसियां थी वहां पे, और ये अरेंज आज से नहीं था, 1900 इनफैक्ट 1800 1900 से ये चल रहा था अरेंजमेंट, और इसको पाकिस्तान ने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था। इनफैक्ट अयूब खान ने बोला था अपने मेमोइर्स में कि इट इज गुड दैट वी विड्रू फ्रॉम द फाटा रीजन, बिकॉज ये लोग सिविलाइज्ड हैं ही नहीं, ये बारबैरिक हैं, और इनको इनके हाल पे छोड़ना चाहिए। हमारे को सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहिए कि ये ना हमें तंग करे ना हम उनको तंग करें, तो हम अपनी जिंदगी बसर ठीक से कर सकते हैं इस इलाके में। दैट arrangement was broken in 2018. Do you think that there are huge amount of now ungoverned spaces? They may not declare independence, they may not declare that they are independent state, but आज की डेट में केपीके और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अनगवर्नड जो जगहें हैं काफी बढ़ती जा रही है, और वहां पे इनकी रिट चल रही है, ना कि पाकिस्तान आर्मी की रिट चल रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इसका असर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होगा? Absolutely. Ab PTM dekh lo, where now that is another group which is rising, which wants no terrorism. It doesn't want the Pak Army. It करेक्ट। wants peace. Now, but within KPK or within the good old FATA and Waziristan and all those areas now being combined together, there are large areas where there is supposed to be control over by the ISIS. There are areas which are supposed to be controlled by the TTP. And those are the areas which are the interiors, the hill tracks, which is why when the US or when the Western world tells Pakistan that ISK, Khorasan, which is there, is existing, Pakistan is aware. It is unwilling to launch because it will get into another battle which it cannot handle. So it is not TTP alone. ISIS Khorasan is also existing in the same area. They have their own regions. There are clashes occasionally between ISISK and the TTP. But largely they maintain their own areas. Where the TTP is expanding is hitting the Pak cantonments. And very rightly, the spokesperson from the Taliban said, or the defense minister of the Taliban said, if they were in Afghanistan, they would attack your border outposts. If they are attacking your interior outpost, then they're not attacking from Afghanistan, they're attacking from within Pakistan. And if they're Yes, within Pakistan and you're not able to clear those areas, it implies that these areas are governed by the TTP. Very simple, 2 plus 2, 4 hai. बिल्कुल। सो लॉजिकली तो आप सही बोल रहे हैं कि इस समय जो इलाके हैं काफी टीटीपी के नीचे आ रहे हैं, और इसलिए जो मैंने जो हम लोगों ने ये जो फ्लायर निकाला था वो ये था कि इस पाकिस्तान लूजिंग टेरिटरी, यानी कि उसका अपने ही टेरिटरी से कब्जा कम होते जा रहा है। लेकिन ये कब इतना कम होगा कि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बदल जाए? Even if it won't, अगर मतलब इंडिपेंडेंट नेशन की तरफ भी अगर ना बढ़े, इतना प्रेशर उनके ऊपर माउंट हो रहा है that they can't look towards the Indian side. बिल्कुल। The आपको मैं whole आपकी बात shifting of reserves has gone here. आपकी बात को पूरा करने में ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को, अपने ऑडियंस को, इसमें एक पाकिस्तान का जो डीआईजी है, डीआईजी एक काफी बड़ी रैंक होती है, ब्रिगेडियर, इंडिया में तो उसको ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कर दिया, पहले नहीं था, बट एनीवे, ये एक अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ रहे हैं कब तक हमको इस तरह से मार खानी पड़ेगी, कब तक हमारी जो फैमिली है। तो प्रेशर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पड़ रहा है। मैं आपसे अगला जो सवाल और जो फाइनल सवाल होगा उसके बाद फिर हम लोग अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो ये है कि मैंने या कई लोगों ने भी इस तरह से बातचीत करनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान दो चीजों से सरवाइव करता है। पहली जो चीज है वो है
उसकी आर्मी, इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं नो पाक आर्मी नो पाकिस्तान, और या नो पाकिस्तान नो पाक आर्मी। तो वो उसकी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका एक प्राण है, जो बोलते हैं ना रावण का प्राण कहाँ पे है, उसकी नाभि में है, तो वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है। दूसरी जो चीज उसको सपोर्ट करती है उसके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और न्यूक्लियर वेपन्स जो इस समय हैंडल कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन जो उसके पास हैं, जो कि इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, एक इनडायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, और यहाँ मैं भारत वाला एंगल लाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक रेटिंग निकली थे, न्यूक्लियर सेफ्टी रेट, ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी रेटिंग, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर दिखाया गया है, अरेंजमेंट्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ये कौन सा गेम चल रहा है? इसके ऊपर जरा आप अपनी रोशनी दीजिए। आई होप आपने इस न्यूज़ को थोड़ा सा गौर किया होगा, और जिस तरह आप पाकिस्तान में अटेंशन रखते हैं, पक्का इसके ऊपर कुछ किया होगा। तो ये कौन सी नई चीज शुरू हो गई है, नई बला शुरू हो गई है, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। एवरी थर्ड वीक एक नई रेटिंग निकलती है, मोस्ट ऑफ देम यू डोंट हियर अबाउट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी रेटिंग लेके ट्विटर पे डाल देता है, इट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड। करेक्ट। उन्होंने कहीं असेसमेंट किया, और जैसे किसी ने पहले एक बार रिसर्च में बताया था कि हाउ इज द रेटिंग टेकन, चंद लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग लेना चाहता है उन्हीं को अप्रोच करता है, जनरली डिपेंड्स ऑन whom they want to choose। पाकिस्तान में अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ पॉइंट दिया या आर्मी के खिलाफ पॉइंट दिया, वापस तो आओगे नहीं, वहीं से गायब हो जाओगे। इंडिया में अगर आप सरकार के खिलाफ पॉइंट दोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। बिल्कुल। सो द रेटिंग हैज नो वैल्यू। द पॉइंट ओके। इज, इट is only for Pakistan that the US and other nations in the West ने प्लान बनाया हाउ टू गेट द न्यूक्लियर वेपन्स आउट इन केस पाकिस्तान कोलैप्सेस। ये इंडिया के लिए क्यों नहीं बना? Why is there a fear of Pakistan nuclear assets falling and not Indian, that you have to have a plan in hand as to how do you secure nuclear assets? And why is it that the world is only concerned कि भाई Pakistan nuclear assets कहीं should not land into the hands of the Al Qaeda? पहले Al Qaeda था, now it is ISIS, now it is the rest of the groups. Why don't they talk about Indian assets? It automatically tells you where security factor is और कितना genuine है ratings. बिल्कुल। And if the world is looking at this, एक एजेंसी जो 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग का लेके कमेंट डिटरमिन करता है कि किसकी सिक्योरिटी है, हाउ कैन इट डिफाई द वर्ल्ड लॉजिक? इनफैक्ट आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये भी बोलना चाहूंगा कि आजकल ये जो गेम ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है, इस गेम ऑफ नैरेटिव्स में रेटिंग्स को इतना बदतर बना दिया है कि लोगों ने इसको एक इंफॉर्मेशन वॉर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और मेरा मानना है, और आपका भी उसी तरफ इशारा था, कि ये कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारत के खिलाफ करने की कोशिश की गई थी, जो कि बहुत ही वीक, कमजोर, और मेरे हिसाब से एक बड़ी भद्दी कोशिश थी, जिसको कि अंधा भी बोलेगा कि यार ये तो मतलब क्या क्या लिख रहा है, ये बिल्कुल बकवास लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है। जो बहरा है वो भी बोलेगा कि ये गलत बोल रहा है। तो मेरा ऑडियंस को सिर्फ यही बताना था कि कृपया डू नॉट टेक cognizance of such ratings which are not really, I had not heard about this rating in the past। आपने बहुत सारी रेटिंग्स की बात सुनी होगी, बट ये सडनली न्यूक्लियर सेफ्टी वाली रेटिंग्स कहाँ से आ गई? सो आई थिंक वी शुड टेक एवरी न्यूज आफ्टर अब now if you want to propagation। look at it, the US nuclear weapons in Turkey, how secure are they? एब्सोल्युटली। सो वो कहने की बात है, जो ये रेटिंग बना रहा है, कैसे बना रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और फिर उसके बाद आगे बातचीत करनी चाहिए। आवर फाइनल कमेंट्स बिफोर वी लीव फॉर द ऑडियंस टू आंसर देयर क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस आ भी गए हैं। मैं आपको एक चीज की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि जो इंडस के बाईं तरफ का, इंडस के वेस्ट की तरफ का जो इलाका है, बलूचिस्तान और केपीके की हमने तो काफी बात कर ली थी, लेकिन अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके की भी बात करें,
तो इस इलाके में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई है। पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे, अप्रैल में भी आपने देखा होगा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये एक उसकी इमेज है उस न्यूज़ आइटम की, और ये हमारी नहीं है, पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी ये सब चीज़ें छपी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें छप रही हैं, लेकिन एक लास्ट में, और क्योंकि मेरा ये एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था, तो ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट में एक और चीज़ हो गई पिछले हफ्ते, और वो थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके को पूरा का पूरा ट्विटर ने भारत में दिखा दिया। तो आधी लड़ाई तो हमने लड़ ली है। अब ये कहाँ से चल के आ रहा है? ये इसके ऊपर, इसके पीछे कौन है? क्या एलन मस्क अब पूरी की पूरी जो है टेस्ला इंडस्ट्री इंडिया में लाने की खुशी में इन्होंने ये किया है, या क्या रीज़न है आई इसका? डोंट थिंक, ऑन फ्रैंकली द फ्रैंकली मुझे ऑन द लगता है लेटर that नोट this, नहीं नहीं, फ्रैंकली मेरे को लगता है that this may be a mistake, पर ये शॉर्ट टाइम है। था। बट अच्छा। मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं, पर आपने जो पॉइंट रेस किया गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके का, टुडे व्हाई इज देयर सो मच ऑफ अ चेंज इन कश्मीर? बिकॉज यू आर सीइंग अ डिटीरियोरेटिंग पाकिस्तान, एंड जब पाकिस्तान डिटीरियोरेट करता है, amongst the most ignored provinces are Gilgit Baltistan and POJK. तो इसका असर ऑफ डिटीरियोरेशन हैज फाइनली dawned on those जो जिनका शिफ्ट चल रहा था टुवर्ड्स पाकिस्तान से, हुँ। that this is stupidity. Where we are, what we are seeing, what we are witnessing is a world of a change, and I think uska asar has been of a major benefit. But Elon Musk, I don't think lasted long. मैंने कहा within 24 hours it was reverted back to normal. नहीं, वो ठीक है। मेरा कहने का मतलब कई बार कुछ चीज़ें ट्रायल के लिए भी हाँ, की oh जाती yes, हैं। To oh see the yes, public opinion कि what does the हाँ हाँ, public feel this way. So maybe it was a कोशिश थी उस डायरेक्शन में, या मे बी कोई कोई जो चाल थी वो शायद पूरी तरह से चली नहीं। So finally we can conclude that the region of country Pakistan is shrinking in terms of its writ, now getting restricted to almost Punjab for one, and I would extend it to say that okay, POK to a large extent because of the quantum of presence जो है, और वहाँ पे जो इन्होंने एक जो टेररिस्ट का जो गेम खेलते आ रहे हैं एलईटी जेईएम के साथ, वो अभी भी उनके साथ हैं। तो लेकिन इनका जो वेस्टर्न रीजन है, मैं तो अब इसको डिनापर रिवर बोलने लग गया हूँ। इंडस रिवर को वहाँ पे जो चल रहा है उनके साथ, तो वो जो इलाका है तकरीबन उनके हाथ से चला। अगर वो कुछ बहुत मेजर करते हैं, अगर कोई मेजर ऑपरेशंस करते हैं तो अलग बात है, और उन सबको पता है कि अफ़गानिस्तान यानी कि पश्तून जो लड़ता है, वो हवाई जहाज़ों से नहीं डरता है, मिसाइलों से नहीं डरता है, ड्रोन से नहीं डरता है। उनको दिन-रात की आदत पड़ी हुई है ड्रोन्स के हमले खाने की। तो ये तो मेरे ख़्याल से ये भूल जाएँ कि वो वाली टैक्टिक्स उनकी काम आएगी। यहाँ अगर कुछ काम आएगा तो शायद उनको भारत से सीख लेनी पड़ेगी, जिस तरह हम लोग अपने इलाके को मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी आएँगे। सो विद दैट सर वी विल टेक ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, एंड ठीक है। टुडे वी हैव in fact, okay, Jitinder says very interesting topic which has implications on India. Fine, thank you. Okay, how is our situation? And this is a question which I would like you to specially answer in detail, because we are going to have a program. इसके ऊपर हम अगले हफ्ते अगले 2 दिन के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप चाहूँगा कि आपसे इसके ऊपर ओपिनियन ली जाए. How is our situation in Manipur different from problems in Pakistan? See, Manipur is basically a battle between ethnic groups. There is support, no doubt, from official, unofficial terrorist groups, whole lot of confusion. But it is more of a fight between two ethnicities. You are not targeting the state. You are not targeting state security forces. So that battle is for domination of land, for securing of your land rights, for securing of your forest rights. I mean, it is
Actually, Manipur is a confusion of a lot of things: drug smuggling, poppy cultivation. But the Yes. basic root cause is the ethnicity problem. You are not targeting the state unless the state comes in to stall the ethnicity battle. Whereas in Pakistan, it is a fight by terrorist groups against the state. It is a fight to break away from the state and create an independent state. So there is a very, very vast difference. Neither of the communities in Manipur wants an independent country. They are looking at division within the state of separate administrative areas belonging to different ethnicities. So it's a very, very different story. You cannot link the two together in any way. आई थिंक एंडोर्स योर व्यूज। ऑल्दो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, ये एक एथनो नेशनलिस्टिक प्रॉब्लम है, जिसमें कि हर एथनिक ग्रुप अपने इलाके का जो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो असर है उस रीजन में, उसके बराबर के एरिया को अपने साथ मिलाना चाहता है। आप चाहे नागालैंड को ले लीजिए, उनके कई सारे प्रपोजल्स हैं। ग्रेटर नागालैंड में तो आधा मणिपुर नागालैंड में होना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स हैं आपस में वेरियस ट्राइब्स की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, कुछ चीजें जो मणिपुर में हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। वो एक डेफिनेटली एक बहुत ही निंदनीय बात हुई है, और उसके ऊपर आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट would be taking action. They are taking action. Let us wait and watch. आपको पता होगा कुछ सालों पहले मनोरमा देवी केस भी इसी तरह से हुआ था। काफी काफी गहमा गहमी हुई थी, काफी इनफैक्ट उस टाइम पर भी आप देखेंगे 1000 रुपए, कुछ जब 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, पूरा मणिपुर को ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस तरह की, बट हमने उसके ऊपर काबू पा लिया था। कुछ और भी रीजन से आफ्सपा को हमने हटा लिया था, और मेरा ये मैं पर्सनल मानना है कि जब तक सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल ना हो जाए, आफ्सपा को हम रीजन से जल्दी हटाने की जिद ना करें। जहां हमने आफ्सपा को हटाते हैं वहीं पर प्रॉब्लम्स 3 साल बाद, 4 साल बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स खत्म नहीं होते हैं सोसाइटी से। वो रहते हैं, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और फिर जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो फिर वो दोबारा अपना एजेंडा लेके आगे आ जाते हैं। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रग्स हो गया, आफ्सपा हो गया, एथनिक प्रॉब्लम्स हो गए, कॉकटेल ऑफ रीजंस वहां पर आ गया, जिसकी वजह से, और इसको शायद किसी ने उतना ध्यान से गौर से नहीं तवज्जो दी इसके ऊपर। लोगों ने सोचा एग्रीमेंट हो रखे हैं, सीएफए हो रखा है, एसओ हो रखा है, सीज फायर एग्रीमेंट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली हुआ है, और इसको अभी हमें काबू करने की जरूरत है, इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है, which is what probably the people are doing. Next question is from Weekend Passions. Thank you. Haqqani group is veritable arm of ISI as per Adam Mullen. Your comments. So, Admiral Mullen, see, it was very much under the control of the ISI as long as it was based in Pakistan. Now, as part of the Taliban government, it is out of their reach, which is the reason why the Haqqani network is supporting the TTP. In fact, I just want to read out a sentence. Uh, in fact, Pakistan should have realized, like I had said during the conversation, when the interior minister offering prayers alongside TTP leader Hakimullah Masood, and he's standing behind him in the photograph, yes. which is a time when Pakistan should have realized that Haqqani network is, and you stand behind someone and offering prayers is only when you respect the person in front. So the respect being shown by Haqqani to the TTP leader indicates very clearly that they're not going to interfere. And if Haqqani will not interfere, the Taliban can do nothing. Yes, and there is a bigger message which has gone in the environment because of Afghan Taliban taking over the governance in Afghanistan, and that is that if Taliban fighters can displace a power like United States of America, why our brethren who are on the other side of the fence cannot do so
as far as नहीं नहीं Pakistan is concerned. नहीं नहीं, तो ये पाकिस्तान के commentators have said we don't have the military power or the economy to touch Afghanistan. We cannot think of और anything. All we can बिल्कुल only सर, do is request them. उसके अलावा कुछ नहीं. बिल्कुल सर, हिस्ट्री को ध्यान में रखिए। और एक जो जो 1979 में ईरान से शुरू हुआ था, वो शायद कल्मिनेशन हो रहा है, इस तरफ आ रहा है। अफगानिस्तान हो गया है, और अब इस इलाके की बारी है, देखो. इंडस के वेस्ट की बारी है। ओके, वी हैव अत्रे गिविंग अस Yeah, his C3S. see, there are in fact like all of us Kakkars who are now in India, all of us migrated from Pakistan during partition. My father's side came in from Waziristan. So all of us have actually come in from that belt, and you have three varieties of Kakkars in India: single K, double K, and KACKER. Now, those who've remained in Pakistan are very, very largely, almost all are Muslim Kakkars. And there is a Kakkar mountain in Balochistan, which is meant to be the sort of the area from which they all emerged. Okay, there is a question which is from Colonel Chauhan. Sir, keeping situation in Afghanistan and reliability of Taliban, can China afford to invest in Afghanistan? Effort See, क्या, ये तो चल रहा है। we had discussed Yeah, this, and correct. China is being very careful. It is moving very slow. Afghanistan is also playing its own card because it does not want to go into a situation which Pakistan and the rest of the countries are. It doesn't have anything to offer except possibly minerals available. So both sides are being very careful. China is wooing Afghanistan not for minerals alone, but to keep the ETIM away, to keep Absolutely. its troubles in Xinjiang at a distance. The main problem in Xinjiang flows from Afghanistan. इनफैक्ट जो रीजन है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना चाइना अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देता रहेगा, उतना भारत के लिए अच्छा है। अगर वो हाँ, ईटीआईएम से डर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर जाकर के उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान ने भी उनको सपोर्ट किया है। तो जैसा कि जनरल कक्कड़ ने बताया था, द एंटायर ईटीआईएम कैंप्स हैव बीन शिफ्टेड इनटू द इंटीरियर एंड नॉट ऑन द अफगान चाइना बॉर्डर, जो कि एक हमारे लिए अच्छी बात इसलिए है कि चाइना हमेशा इस बात से घबराता रहेगा और अफगानिस्तान से एंगेजमेंट करेगा। और अफगानिस्तान जैसा देश है जिसको कोई रिलाई नहीं कर सकता है, तो वो किसी भी चीज से ही नॉट बी अश्योर्ड। वो चाइना अश्योर्ड no, नहीं हुआ कि मैं 100% अफगानिस्तान को अपना अपना मान लूं। अगर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इतना क्लोज फ्रेंड था पाकिस्तान का, आज की डेट में खुलेआम उनको अपोज कर रहा है, या उसकी हालत नहीं है सपोर्ट करने की, जो जिस तरह से भी आप देखना चाहें, तो मेरे ख्याल से इट विल बी गुड दैट दीज नेशंस व्हिच आर अराउंड इंडिया keep looking at their own security and do not bother India. Give us the space to go ahead. Yeah. So एक और क्वेश्चन है, ये तो कर्नल आरपी ने पूछा है। इज ट्रू US closeness to India is on the rise, keeping Taliban into West, and their interference in India is on the decrease? yes, the US interference is on a decrease. Taliban is very safe as far as India is concerned. I think we are the only country which is providing them food stocks. और कोई नहीं Yeah, भेज रहा. And we are sending it through Iran. In fact, the anger between Taliban and Pakistan, another factor was the game Pakistan played to permit Indian food stocks to go there. Today, when absolutely. we can send it through Iran, which is why, and plus, they are now requesting us to recommence our investment into the construction of those dams which had stopped once the Taliban took power and the US withdrew. So they want us to recommence. So I think, as far as India Taliban relations are concerned, as long as they need something and we are in a position to help, I think the relations will be stable. And we don't Yeah, have a border. That is the best and the safest part. absolutely. The recently released movie Kerala Story shows the dangers of terrorism for India, even for civilians. What are the dangers of ISISK for India? Yeah, India good is question. equally concerned about ISISK. We are more. In fact, recently, agar aap dekho, there have been 2, 3 arrests in UP, Yes, and all of them were just individuals who were out to target the community. correct.
And I mean, when you're looking at lone wolf attacks, which is the biggest concern, and lone wolves are being influenced only on social media. I mean, Correct. YouTube gives you everything today. And there is no organization, including ISIS, which doesn't have a social media network where people are not aware of. So basically, that fear remains. It is not only, I mean, the fact is that the government of India and the Indian intelligence agencies are keeping a very close lookout for anyone who's getting influenced by ISISK. Okay, before we go ahead for any other further uh, questions, I would like to request our audience that we are a young organization which have started this Strive dialogues, and we are trying to bring to you some quality discussions on issues which are relevant to you. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि हम लोग और ज़्यादा अपनी रीच को बढ़ा सकें। इस समय हमारे देश में ऐसे चैनल्स की कमी है जो कि स्पेसिफिक मुद्दों पर, सिक्योरिटी के मुद्दों पर एक फेयर एंड ऑब्जेक्टिव कमेंटिंग करते हों। हम लोग किसी की साइड्स नहीं लेते हैं, हम बिल्कुल जो फैक्ट्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। अब उस एनालिसिस से क्या निकल के आता है, क्या किस तरह से होता है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग जो हमारे विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, हु कम ऑन द नेट, हु कम ऑन द शो, have their own viewpoints, but by and large we ensure that everything is analyzed। हर चीज का विश्लेषण जो है एकदम फेयर पॉजिटिव तरीके से किया जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। और the Chinese hand in Manipur is quite prominent, and the illegal migration, poppy cultivation, lure for mining are some of the major reasons। I think ये हमने डिस्कस कर लिया है और जनरल कक्कड़ ने भी इसकी बात की थी। अगला जो सवाल जनरल चतुर्वेदी ने ही पूछा है, गिलगिट बाल्टिस्तान इज ओके, but do we really want POJK to be with us in a hurry? I will not answer this question anywhere here. There are multiple So, ways of looking at it, so I'll leave this aside. या सो और इन एनी केस इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे, बट उस डिस्कशन को हम एक बुक रिव्यू की तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि अगेन जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो अप्रोच है वो ये है, पॉलिटिकल अप्रोच है। हम लोग जो एनवायरनमेंट ओपन सोर्स में है उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या उसे लेना चाहते हैं। द अगला जो ओके ये तो पूछ लिया था। अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, द स्टेट इन विच पाकिस्तान इज टुडे, दे हैव नो लेवरेज। बिल्कुल सही है सर। यू वांट टू ऐड एनीथिंग सर? Nay, they have no leverage. In fact, I would like to link this to what Rakesh Bhatia also made a mention. How come a powerful intelligence agency, ISI, perpetually fails to assess emerging situation in Pakistan, Balochistan, and KPK? या Well, या it is overconfidence, koi shak nahi hai. And linked to this overconfidence is a fact that they cannot penetrate the TTP. It is beyond them to penetrate, and they failed. Otherwise, they could have offset a large number of attacks. And surprisingly, they don't have the support coming in from the US, which could have easily come in terms of advance inputs, especially ओके। communication inputs and the rest of it. But it's a fact that they've now been literally left on their own to go through. We have another question from Mr. Chandrasekhar Murthy. He has become one of our regular viewers, and thank you very much, Mr. Chandrasekhar Murthy. Who, as government of Afghanistan, can provide a stable and internationally acceptable Afghanistan? See, Your view. the requirement of the world is very simple. It has to be a coalition government involving all sections of society. Women have to be given the respect they deserve to be given, which is not being done. Until women are inducted and until a coalition government is set, the world will not provide any support. And Afghanistan is the Taliban is unwilling to back down from its religious agenda, from its religious stand, and it is literally now standing alone against the rest. Yeah, and we would like to just add here that a total of 12 billion aid has been promised to Afghanistan, out of which they were supposed to be releasing about 3.2 billion this year. But even that they have put restriction on the ground
कि जब तक आप जेंडर राइट्स और जब तक आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब को इनको सुधारेंगे नहीं और अपने जो स्टोन एरा वाले रूल्स रेगुलेशन रखेंगे, हम आपको एड नहीं देंगे। उन्होंने बेसिक 2 बिलियन रिलीज किया है जो कि उनको जस्ट सर्वाइवल देगा। अफगानिस्तान की जो पॉवर्टी लेवल्स हैं, भले ही उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से अच्छी हो, लेकिन उनकी जो पॉवर्टी इस समय है, बिकॉज की पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर भी हमला हुआ है, पूरा का पूरा पॉपी कल्टीवेशन खत्म कर दिया गया है। उनकी जो पॉवर्टी है इट्स स्टैंडिंग एट 74%। खाने के लाले पड़ रहे हैं, और इट इज they should thank India that we have been giving them, like what we had just हाँ, told you, that despite the fact that पाकिस्तान ने मना किया, हम लोगों ने ईरान के थ्रू इसको वो किया। और आपको पता होना चाहिए, चबहार पोर्ट जो कि हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी कनेक्टिविटी जो थी वो भी हम बना रहे थे, इरकॉन कंपनी थी हमारी, वो हमसे लेकर के ईरान ने चाइना को दे दी है। और फिर भी इतना सब होते हुए भी we have been giving Afghanistan. It's a people to people connect which we are honoring. It is not government. We are not recognizing Taliban. We are not recognizing anyone in a hurry. We are giving aid to people of Afghanistan, and I think Jan a very Kakar would agree powerful with statement. Jan. Yeah. There is another question which has come from Kumar Gopalan. Thank you, Kumar. Now reports are coming that Afghan Tajiks are doing good support to Chinese. Further, Pashtuns are against the Chinese. See, Pashtuns are against the Chinese for a very simple reason. Chinese are in Balochistan. Chinese are looking at taking in the minerals from Balochistan. Automatically, in that scenario, Pashtuns are on both sides of the Durand line. And there is a very close affinity between them. And as long as the Chinese continue coming into Balochistan, the Pashtuns are going to be anti the Chinese. There is no doubt. Tajiks have got no link with China, except the fact that if the Chinese come into the area, there's going to be some amount of employment, some amount of opportunity. So they are willing to support. The Pashtuns will never be there with the Chinese. Absolute, absolute. I think everybody is being transactional here. सभी लोग अपना फायदा देख रहे हैं और उसके That हिसाब से is it. काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। HRC, the former late ISI chief Hamid Gul used to say, not Hamid Gul के एक और कहानी मैं इसे मैं नहीं बताऊंगा, not to say used to say not only Pakistan will take back Kashmir, but New Delhi also, and even Central Asia with the help of Taliban. ये सब सपने इन्होंने देखा. इफ यू रिमेंबर नजीम, द पीटीआई की जो spokesperson थी, when Imran Khan made a statement saying that Afghanistan has broken the shackles of slavery, and sorry, Neelam, she came on Pak TV, and on TV she says we have nothing to worry about. The Taliban have promised that they will help us retake Kashmir. कश्मीर, आज तो वो बेचारे तालिबान से तो अपना इलाका बचा ले वही बहुत है. पूरा पाकिस्तान के निकल के कश्मीर तक कहाँ आने वाले. और ये सारी बातें उसी पे आ जाती हैं जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था, जिससे शुरुआत की थी जॉन कक्कड़ ने। इफ यू रेज स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, don't expect them to love you, right? I think ultimately they will come and bite you. That is what is happening. So वो उसी तरह की स्टेटमेंट थी जब वो 1965 वॉर हो रहा था कि वी विल हैव ब्रेकफास्ट इन राजस्थान एंड लंच इन दिल्ली। आई थिंक वो जो एक रात में जो एक दिन में जो ब्लिट्सक्रीग करना चाहते थे इंडिया के ऊपर, उनको शायद सपने आ रहे थे, और अगले दिन निकल गए सपना देखते ही, और उनका हश्र क्या हुआ कि एक कंपनी ने रोक लिया उनको। चलिए, वो कहानी अलग है, उसके ऊपर हम बाद में जिक्र करेंगे। वी कैन कॉल That is a separate. That's a ओके। suggestion. ठीक है. Okay, sir, we'll use that. Would you like to touch upon the areas where India should remain cautious, because the way situation in Pakistan is spiraling out of control? It is fallout will come on India too. Absolutely true, sir. Would you like to say something on it, sir? See, basically, first factor is that as far as India is concerned, we always prefer a stable Pakistan. The aspect is that stability in Pakistan also doesn't imply that you try and destabilize part of India, which is Kashmir. You're looking
And as long as Pakistan is in turmoil, the fallout of the turmoil is bound to come into India. If Pakistan breaks, today we're getting our maids who've crossed over who are basically Rohingyas, or they've crossed over from Bangladesh. For all you know, in the future, you will get them coming in from Pakistan's Punjab, because there's no other option. So for us, that spillover is a fear. Second aspect is instability in Pakistan. The only way to try and offset that is by pushing in or trying to create instability in India. An unstable nuclear Pakistan is not only a threat for India, but a threat for the entire region. It's a global So, threat. if you look at it, there are multiple reasons for India to be concerned. Most important is to ensure that Pakistan remains as a state, though we keep saying that it's going to break. But if Pakistan remains as a stable state, that will be the best for us. But we also got to accept the fact that instability in Pakistan is here to stay. And if instability in Pakistan is here to stay, with the way KPK and Balochistan is expanding in problem, there are no signs of any reduction anywhere. We need to keep ourselves on the ball, try and prevent a similar sort of scenario coming in from lone wolves who are being motivated. We need to also keep a check in terms of the move over of population coming in, not only for this, but also terrorists which Pakistan will attempt to push through, only with the intention of keep themselves. They have a false feeling that India wants to break the country into four parts. So, which is one of the major reasons why they want to keep maintaining instability in Pak. So, we need to keep a check on both accounts. And there is no doubt about it, instability in Pakistan is here to stay. Yeah, so a big statement: instability in Pakistan is here to stay. Two big figures I will give so that people understand what we were talking about, why we are concerned about, and why Jan Parmar gave that question. Last year, 2022, officially recorded data, and this is not official. Unofficially, I don't know how many would have gone. 750,000 people have left Pakistan because of the year of 2022, the way it was internally unstable. It is okay that they are currently having, these were the rich guys who had the handle to manage to go to the better off countries. Imagine if the instability increases to levels where people are forced to flee Pakistan. They won't have the kind of luxury to go. वो ऐसी जगह नहीं जा पाएंगे जहां पर कि पैसा दे के जाना पड़े, तो वो कहाँ आएंगे? वो भारत में आएंगे। भारत में अगर आते हैं तो इसमें कितने सही लोग आएंगे और कितने गलत लोग आएंगे, आप कह नहीं सकते हैं। दुबई का रूट है, नेपाल का रूट है, बहुत सारे रूट्स हैं, खाली एक रूट नहीं है, सी रूट है। अगर वो सी के रास्ते से आके मुंबई में अटैक कर सकते हैं और ग्रीस तक जा सकते हैं, तो भारत में घुसने के तो 50 रास्ते हैं। इस समय तो हमारा जो सी बोर्ड है, वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल किलोमीटर टू किलोमीटर डिप्लॉयमेंट हो। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, बट फॉर अस इनवर्ड लुकिंग पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जो अंदर ही अंदर अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है, और वो चाइना जो अंदर ही अंदर अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है, भारत के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन। we will move on to the next question, sir. That's it. That's it. Yeah, but let me show you. Let me show the viewers our chairman's comment. An extremely interesting conversation. Great show, Strive. I will take it forward and to say thank you very much, sir, and thank you to our audience. Please, come out in larger numbers. Have a look at our show, even when it is offline. Please like, subscribe to us. We promise you that we will be giving you the best kind of discussions which can happen on security matters which are dealing with national security and nation building. हमारा दो ही मकसद है, हम वही प्रोग्राम करेंगे जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है और जहां राष्ट्र की निर्माण का बात होती है. With that, thank you very much, sir. Goodbye, sir. Till we meet next. Thank you. Yes.